हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे जैसे आपको पता है कि गली न्यूज़ ने एक मुहिम चलाई जिसमें जो मुस्लिम्स हिजाब वुमेन्स हैं जो अपने अपने प्रोफेशन में बहुत माहिर है, बहुत हाई है, उसकी कैटेगरीज हमने बनाई थी। पॉलिटिशियंस, सीए, स्पोर्ट्स, एनजीओ, लॉ और डॉक्टर्स और आईटी प्रोफेशंस, उस कैटेगरी में सब लोग ने नॉमिनेट किया। और हमारे आज की अभी की जो हम आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं उनका नाम है मारिया गौर घोरी, and she is currently associate professor and head department of sociology, Rizvi College of Arts and Commerce. Welcome to Gallinews, ma'am. Thank you very much for giving me this opportunity. It's our pleasure, ma'am. मैम, आपका प्रोफाइल बहुत लंबा है, मैंने अभी देखा है यहाँ पर, तो कृपया करके आप एक शॉर्ट्स में what is Mariyah Gour Ghori and why she is known in Muslim community and in other community, एक छोटा सा आप बता देंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। एक टिपिकल फैमिली, मुस्लिम फैमिली जिसका बैकग्राउंड, ऑफ कोर्स आई बिलोंग टू अ वेरी हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड फैमिली, लेकिन ऑफ कोर्स एक ऐसी फैमिली जहां पर लड़कियों की तालीम को इतना ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। आई हैपन टू बी अ रिबेल and I fought for my education, and alhamdulillah I'm very happy at this point of time. All the girls in my family, they all have come ahead and they all are trying to excel in their life. So it's we say charity start at the family. So I'm really happy that that struggle that I faced in my family for my education, the way I had to fight for, आज की नस्लें आजाद हो गई। तो आज बहुत खुशी होती है। किससे फाइट किया? With the family, when you know family was not convinced. Was your family very orthodox? No, my family was not orthodox, but my family always used to think that I am very progressive. और ये लड़की बहुत ज्यादा एजुकेशन ले लेगी तो इसके क्वालिफाइड इतना लड़का नहीं मिलेगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह माय हस्बैंड इज आल्सो इक्वली एंड मोर क्वालिफाइड। हर मुस्लिम फैमिलीज में होती है मैम, ये बात यकीनन। आज की तारीख में भी मैं आपको बता दूं कि ये परसेप्शन चलता है कि अरे ज्यादा पढ़ लिख लेगी और उम्र हो जाएगी, मीन्स क्योंकि हाईली क्वालिफाइड होने के लिए 22, 23, 24, 25 साल तो लगते हैं, तो उसके बाद वो ऐसा लगता है लड़का नहीं मिलेगा, उसके लेवल का लड़का भी नहीं है हमारे पास। जी बोलिए। तो एक मसला जो हमारे मुस्लिम माशरे में है वो सबसे बड़ा ये हो गया आज की तारीख में, जहाँ बेटी पढ़ाओ की बात आती है तो हम बेटियों को तो बहुत ज्यादा तालीम देने की कोशिश में सरगर्दा हैं, लेकिन उसी के साथ आप देखेंगे तो हमारे लड़के जो हैं वो तालीमी मैदान में बहुत पीछे रह जा रहे हैं। सही बात है। तो आज जब मैं उस मुकाम पर पहुंच चुकी हूँ, जब मैं अपने बच्चों को एक माँ होने की हैसियत से देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, हमारे वालिदैन हमारे लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद थे और शायद उनकी फिक्र सही थी, क्योंकि आज की तारीख में ऐसे बहुत से केसेस भी देखने मिलते हैं जहां पर हाली का क्वालिफाइड लड़कियां अगर कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं तो देन दे हैव प्रॉब्लम डीलिंग इन द फैमिली। तो एक हमारे माशरे में ये बहुत सख्त जरूरत है ये कि हमारी माएं, हमारी फीमेल जब एजुकेटेड हो जाएंगे तो डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट जनरेशन में लड़के भी उतने हाईली क्वालिफाइड हो जाएं, बिकॉज द मदर्स आर गोइंग टू बी माँ की गोद जो है वो पहली तालीम गाह है। तो अगर वो माएं पढ़ी लिखी भी होंगी तो यकीनन वो अपनी बेटियों के साथ साथ बेटों की पढ़ाई पर भी ध्यान देंगी, जो कि आज की तारीख में सबसे बड़ा मसला है। बात करते हैं आपके किरदार की। आप एक हिजाब वुमन हो, आप एक बड़ी मुंबई की बहुत बड़ी कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर हो और हेड डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की हेड हो। अब ये बताइए कि आपका जो मैंने ये देखा है प्रोफाइल देखा, उसमें कुछ गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट, एस्पिरेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कुछ प्रोग्राम्स हैं और कुछ अवार्ड्स मिलेंगे, जरा उसके बारे में कुछ बताएंगे तो जरा हमको भी लोगों को बताना कि ये वो शख्सियत है जिनसे हम बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं खुद यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन मैं फिर आपसे वही कहना चाहूंगी कि हमारे माशरे में जो आई रिमेम्बर माई फादर, लेट फादर डॉक्टर असदुल्ला गौर, उनका कहना ये था, बेटा पढ़ लोगी और आईएएस ऑफिसर बन जाओगी और उसके बाद तुम अगर शादी करोगी तो हाउ आर यू गोइंग टू कोप अप विद द फैमिली। तो ये कंसर्न बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर तुम तो बेटा मुझे पता है तुम बहुत काबिल हो, तुम आईएएस बन जाओगी, लेकिन क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ में जॉब शिफ्ट करने के लिए आएगा? And then, there was a time I had to think over whether I should give it up or I should continue. And then I thought, no, I better take up teaching as my profession. And then I moved on for my net set. And alhamdulillah, I cleared my net set also in first attempt. And before my university results came, alhamdulillah, I had joined Rizvi
just with my MA, और in fact Rizvi join करने के 1.5 महीने बाद मेरे MA के results भी आए. कब ज्वाइन तो किया था अल्लाह आपने? ताला ने जी कब ज्वाइन किया था आपने रिजवी? मैंने रिजवी ज्वाइन किया ईयर 2000 में ही ज्वाइन किया. इनफैक्ट रिजल्ट आने से पहले 2001 का मेरा प्रॉपर प्रोबेशन का अपॉइंटमेंट हुआ, बट जो लीव वैकेंसी थी आई हैड ऑलरेडी ज्वाइन इन द ईयर 2000. इट वाज 15th of July एंड माय रिजल्ट्स केम ऑन 4th of August. मैंने एक प्रोफाइल देखा है आपका, इसमें बताया गया है कि यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन जर्मनी. I was selected as a very young student to represent India. से 2 ही लोग select हुए थे. One was me from Bombay University and one was Mr. Tanveer from AMU. But unfortunately, again, I'm telling you, the family did not allow me to go to Germany. But I'm very happy and I'm very sure that this generation of mine, if they get the opportunity, they will definitely go ahead and they will do excel. अगर यही ऑफर आपकी लड़की को आए तो आप जाने दोगे इनको? Because आपको तो रोका गया था. Definitely नहीं. My daughter, if I would have a daughter, unfortunately, I don't have a daughter. I have 2 sons. But I'm sure even if I have my niece or any of the family members who want to go, I'm sure I'm the one who's going to stand as a very strong wall, fight with the parents that no, she need to go ahead, and all the support which is required, I will definitely be there. What is this? You got an award for Kaun Banega Computer Genius. Computer Genius. This was Bombay University had organized one of the program. मतलब उन्होंने कंप्यूटर कोडिंग के ऊपर एक कंपटीशन किया था, एंड आई वाज नॉट फ्रॉम अ आईटी और अ कंप्यूटर बैकग्राउंड, एंड व्हेन दिस वाज हैपनिंग इन द क्लास I just did it for 2 days and alhamdulillah I was able to crack it. So that was an extra addition which came to me. One of the Swedish magazine has also covered you, ma'am. Amelia. Yes, in year 2012 I was invited to surrogacy GNU. Coming with your name means... When I started doing my research on surrogacy in 2009, I got one of the minor UGC research projects sanctioned by University Grant Commission. And once I did my complete study on Bombay, I was invited to JNU to present my work when the conference was happening. And then I got in touch with the Swedish magazine people who wanted to conduct their study here in Bombay. And the topic that I had chosen was a very sensitive topic. It required a kind of a sting operation where I had to go to the hospitals and clinic, acting sometime as an agent, sometime as a surrogate, sometime as a intended parents. All these kind of things were required for me to get my first-hand data. So when I had the Swedish magazine people who came to me and they told me that they wanted someone who can act as a translator in Bombay. Sorry, ma'am. Yeah, we'll cut from here. Yeah, continue. So they wanted somebody who can be a translator for them in Bombay. So I said, I can be a translator. I can help you out to translate your which language? Messages in. Sorry? Which language you translated? German? No, they were actually conducting interviews with the surrogates in Bombay. So all the surrogates were supposed to reply back. Coming to surrogacy in Islam, what did you face in Islam as a surrogacy? You were doing a research in definitely surrogacy. In Islam it is forbidden, it is haram. But ironically, when I move into the field, I realize there are large number of surrogates who are Muslims in Delhi, even in Bombay. These are 2 areas where I could get the maximum number of surrogates were from Muslim community also. But before moving into the field, I also had my own ideologies. But definitely when I met the surrogates, I realized they were the poorest of the poor, and that relative deprivation of them which forced them into this kind of a negative activity. And it's a question of struggle of survival for them. अच्छा, आते हैं आपके हिजाब के ऊपर. Since when you are wearing the hijab and how do you feel wearing a hijab? I think coming from a family where you have seen everyone who is wearing a burqa or a hijab, it's not something that it comes as if you're thinking about it. For me, because I saw everybody, I was fascinated. So maybe I was just waiting when I will get a chance to wear it. It was that kind of a fascination for me. When you started, but of course at the age of 13, when I was in my 9th standard at Maulana Azad High School, Bombay Central. And then during my education at Maharashtra College also,
I think I was the one who was very progressive with my extrovert qualities, participating in all the things, and background at Maharashtra College actually provided me a perfect niche for development. My professors were very positive about it. And not even that, when I was in Bombay University, I think it was a post riot era when I joined 96, 97. And that was a time, I think in sociology department, or maybe there was that kind of a thing that in Bombay University यही लगता था कि अगर मुस्लिम लड़कियां हैं तो वो या तो अरबिक में जाएंगी या उर्दू में होंगी या पर्शियन में होंगी. So people, when they used to look at me with my sport shoes and with my hijab in my sociology department, they were very positive about me. In fact, all my professors, they provided me the best of the support that they could. And Alhamdulillah, that turned out well. So with my academic career, even whatever was a problem in the family, I continue to top the university and I continue to prosper in my education field. Alhamdulillah. Alhamdulillah. We missed that Swedish magazine, Amelia. Yes, Amelia people sorry. were here in Bombay. Mm-hmm. Yeah, so they were meeting the surrogates. They had the embassy letter, and that is why they had access to Surrogacy India. Mm-hmm. And I went as a translator. I said, rather than paying somebody, I will be available to you free of cost. Only thing is the data that I'm going to collect, I will use it for my research also. So that they allowed, and they provided me with a letter for that. So I went with the journalist, and we were in Surrogacy India. You went to Germany all the way? No, I did not. I did not. From here so for the Swedish magazine, we covered a special story, and I am being featured into that Swedish magazine, Amelia. My photograph and my whole complete work is also being there published. Now coming back to your father's wildest fear. Yes. इतना पढ़ लिख ली और तो लड़का कैसे मिलेगा, क्या होगा, उसके बारे में बताइए कि how do you manage to get married, and what was the scenario at that time, being a Muslim hijab woman, doing a sociology, wearing hijab, wearing sports shoes, and you have some interest in sports also, I've seen. Yes, I was good with my carom, I was good with my table tennis, and I was of course champion for my chess also in the college days. बात बताऊं, जरा भी एक है ना नॉर्मल मुस्लिम लड़की के आपके कोई भी इसमें वो नहीं दिख रहा है. आप कैरम खेलो, बहुत कम लोग कैरम खेलते हैं. चेस, मैं तो चेस पे उठ के भाग जाता हूँ, दिमाग इतना यूज होता है. That was my passion. और तीसरा क्या बताया आपने? टेबल टेनिस. टेबल टेनिस बहुत टेबल टेनिस एंड चेस. आपकी हर चीज यूनिक है और एक्स्ट्रा वो है. डैडी के वाइल्डेस्ट फियर के बारे में बताइए, जो उन्होंने कहा था, जो हर एक मुस्लिम बाप सोचता है कि यार मेरी बेटी ज्यादा पढ़ लेगी, ज्यादा क्वालिफाइड हो जाएगी तो उसको उसके लेवल का लड़का है. हाउ डू यू मैनेज टू गेट यू? My husband happened to be one of cousins of one of my students. So that student, one of the students. So he told me, ma'am, I have a cousin and my family is looking out for a bride. Why don't you give it a thought? Your student? I said, see, when I joined, I had students who were of my age. When I joined Rizvi at the age of 22. So all these students were almost of my age. And after 3-4 years of teaching, when he got engaged, he told me that, ma'am, why don't you think, my family want to give a proposal for my cousin? So I said, that I'm not interested for marriage, and the struggle that I've gone through in my family. He said, "Arey ma'am, you just meet my cousin once." And then, when I look at my husband's profile, frankly speaking, when I look at, so when I look at MSc in psychology, I had the time where I told my bhabhi, I said, अरे ये कुछ तो एड़ा बना रहे, साइकोलॉजी तो एमए होता है, ये एमएससी वाले कहाँ से आ गए? And then I realized Madras University was also offering MSc in psychology. So with his background of masters and then his MBA and a lot of diploma, trade, management and all that. So then I realized, I can have a boy, who can be equally qualified and who can be compatible with me. So Alhamdulillah, I have a very good companion who is there to support me at all my level, and that is why I could reach my dream of being doctor. मेडिकल डॉक्टर नहीं बन गए तो डॉक्टरेट तो बन गए, अल्हम्दुलिल्लाह. जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. देखिए, जैसे आप भी एक कॉलेज की प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है कि हिजाब मसला आपको पता है कर्नाटक में चल रहा था, तो अचानक ही at some point of time the school came out, the government came out and said कि हिजाब was not allowed. क्या कहना है आपका इसके? मुझे लगता है कि इस मसले को फिलहाल बहुत ज्यादा तोल दे दिया गया है, क्योंकि
इलेक्शन आते आते कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए होता है, और मुझे लगता है कि सिर्फ यही मुद्दा है, वरना सबको पता है, सबको पता है। I know that all my students to whom I'm teaching, and all my years of learning and teaching, I haven't felt that somewhere you are being discriminated because of your attire or something. No, In fact, जी, in case of me, I have been always very positively taken by people, because people think, oh, there can be somebody who can be very positive about everything wearing a how do hijab. you feel in So hijab? at my level, I have seen it as a very positive thing. So I How do you, personally feel the whole issue of Karnataka has been politicized to yeah, such a level everybody that says like that. people can get their vote bank. Right. I personally feel there is nothing beyond it, and जितनी जल्दी से ये इशू उठाए जाते हैं उतने जल्दी खत्म हो जाते हैं, खत्म, and they got a limited time. it's not a problem between the common men who are interacting with each other. It's not the problem between the neighbors who are living together. It is suddenly a political issue. It's Tell a me, how do you geopolitical feel? issue. How do you feel wearing a hijab? Is it a pride? Is it a For what do you feel? me, it's a pride. Right. For me, it's a pride. And every Muslim girl should have a pride. Don't you think so? See, it is everybody's choice. I said it's my pride, because there are people who are saying that they are wearing because they are being forced and all that. I personally feel I was never forced. In fact, there were times, when I got married to my husband, I had kept a condition that, my husband's family, there was nobody who was wearing a burqa or a hijab. So my first condition was that, I'm not going to give it up. Are you okay? Then only I will think about a ये तो उल्टा proposal. होता है. Otherwise, I don't want to go. एवरी फैमिली में उल्टा होता है. हस्बैंड की फैमिली बोलती है देख शादी करेंगे ना, वो लड़की आ रही है ना, वो बहुत मॉडर्न है, ऐसा है वैसा है, उसको बोलना हिजाब पहने. बट यहाँ तो आप उल्टा बता रहे हैं कि आपने खुद So कंडीशन. that is what I'm saying. For me, it was my first condition. माशाल्लाह. For me, it was my first condition. राइट राइट. सो मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. एक लास्ट पूछना था आपसे, ये आपका नाम जो है मारिया गौर गौरी, कैन यू से समथिंग, बिकॉज इट डजंट clearly says your caste. Means Maria. My grandfather was a Brahmin. He converted to Islam. अच्छा. Then Gaur. And my husband is a Ghori. He's 14th generation of Shahabuddin Ghori. अच्छा. Right. So I was just a little confused about your name, because Maria Christian name है. Majority of the people get confused. Right. So thank you, ma'am, for just one thing more. See, we tried to something, portrait a very good impression about women wearing hijab and going to a very extent level. Just I have told you about people we are selecting from CAs and all field. How do you feel about this? Will we be successful in showing a good image of hijabi women to this program? I feel yes, because at this point of time, I feel there is a time that a change has to come. People have to change their perspective about what kind of attire you wear and where you can be. So people have to think that, the attire and the dress doesn't matter. What matter is how much you are able to ideologically grow and compete the world. मैडम, मैं थोड़ी सी मेरी तारीफ सुनना चाह रहा था हमारे गली न्यूज की, कि आपने ये अच्छा प्रोग्राम किया. आपने बोले नहीं तो शायद आपने हमें इस लायक नहीं समझा होगा, तो मैं सोचा आप बोलेंगे नहीं आपने बहुत अच्छा किया कि आप मुस्लिम वुमेन्स को ग्लोरीफाई कर रहे हैं. फिर भी हम 1 मिनट और इंतजार करते, शायद आप कुछ बोल दो. नहीं, इनफैक्ट मुझे पहले ये लग रहा था कि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है और मैं नहीं वो कर पाऊंगी, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मतलब इतने उसके साथ में भी रात के वक्त जो है तो ऑनलाइन करके मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका दिया. और ये मेरी खुशनसीबी होती कि अगर आज मैं वहां पर होती और तमाम लोगों से मेरी मुलाकात हो जाती. उज़मा बाजी इज लाइक अ गॉड मदर टू मी. उज़मा जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? उज़मा नाही जी? जी, उज़मा बाजी is the one who was there standing with me when I had a struggle with my family. Right, so I completed my education because she stood beside me and she convinced my parents. She has been awarded in a category of NGOs, Muslim NGOs. Yes. Right. तो उज़मा बाजी मेरे लिए एक माँ का दर्जा रखती है. She's like my elder sister. She's there with me, She's just one call away from me all the time. Mashallah, she must be seeing it. It's been a relation for like so many years. And we share the same tempo yet. Right, ma'am. Thank you. मैं तो चाहता हूँ कि आपको देख के, उज़मा जी को देख के, इशरत मैम को देख के, फरहाना शाह एडवोकेट है उनको देख के, ये सारे लोगों को देख के, डॉक्टर अल्मास खान है, फिर एक IT प्रोफेशनल्स आई थी, ये सबको देख के एक मुस्लिम वुमन का जो इमेज जो लोगों के माइंड में बनी है, चाहे वो
एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम फैमिली हो या कोई भी, कि नहीं यार एक हिजाब पहन के भी अपने दायरे में भी रह के एक सक्सेसफुल लड़की बना, एक सक्सेसफुल औरत, एक सक्सेसफुल माँ बनी जा सकती है, सक्सेसफुल बहू बनी जा सकती है, सक्सेसफुल औरत बनी जा सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। एक छोटा सा आपका टोकन, एक आपको हमारी तरफ से एक छोटा सा अवार्ड है जो अभी हम आपको भिजा देंगे, बिकॉज ये ऑनलाइन है, मगर हम दिखा दें कि हम वाकई में बना के रखे कि ऐसा नहीं कि वर्बली बोल रहे हैं। जल्दी लाओ ये मैम, ये हम ऐसा फ्लैश कर देंगे, बट यू डिजर्व दिस। आई डोंट नो वेयर यू कैन सी इट। आपका ही नाम है ना मैडम? मैंने तो नाम ही नहीं देखा हूँ। यस यस यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर मैम। मैं आपको ये भिजवा Yes. दूंगा हमारे किसी से। एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Definitely. थैंक यू। Thank you so much. Okay. Okay.